recently you might have noticed and you have seen in the press that the Iranians have offered India to supply wheat via Tehran to Afghanistan. So there were negotiations between Pakistan and India, but unfortunately, those negotiations could not be successful. So it seems that the Indians want to take the Iranian offer to supply wheat because we have not heard something concrete from the Pakistani government. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने जो भारत का ऑफ़र ठुकरा दिया, इंडिया जो अफ़गानिस्तान को गेहूं भेजने वाला था, तो ईरान से अब वो गेहूं भेजने का ऑफ़र इंडिया को मिल चुका है। इसी टॉपिक पे दोस्तों कमर चीमा ने एक अमेरिकी पत्रकार से बात की है और वो पत्रकार किस तरह से क्या बातें कर रहा है वो आप देखने वाले हैं, ठीक है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। वो कह रहा है कि भैया देखिए, इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान ये तो बहुत स्मार्ट लोग हैं यार। वो अपना क्या करना है, उनको किस चीज़ में उनका बेनिफिट है, वो चीज़ देखते हैं। तुम्हारी तरह बेवकूफ़ियाँ नहीं करते हैं वो लोग, ठीक है। क्योंकि आप देखिए, वो बता रहा है इसमें कि चाबार को इंडिया ने कैसे डेवलप किया ओबामा के टाइम पे, और अब उसका बेनिफिट इंडिया उठा रहा है। तो इसी टॉपिक पे आज हमारा वीडियो है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स तो स्टार्ट। सर वैसे ये सब करने में यानी ईरान के थ्रू ले जाने में जो है वो भारत को पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। जाहिर है कि वो रूट चेंज होगा और ज्यादा एक्सपेंसेस पड़ जाएंगे, लेकिन कहीं इंडिया ये सब कुछ इसलिए तो नहीं कर रहा कि जरा पाकिस्तान को नीचा दिखा दे, क्योंकि पाकिस्तान तो अभी ये रियलाइज ही नहीं कर पा रहे। एक हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि जिस वक्त कोई भी इंसान या कोई ये समझे कि मेरे बगैर तो काम चलना ही नहीं है, वो एक बड़ी खुशफहमी या गलतफहमी होती है अपने बारे में। तो क्या पाकिस्तान को भी इस वक्त आप समझते हैं कि कोई खुशफहमी है कि मेरे बगैर तो काम होना ही नहीं है, ये कैसे पहुंचेंगे वहां तक? तो अगर ईरान बीच में आ जाएगा, बेशक ज्यादा पैसे देने पड़े लोगों को, लेकिन हम ऑटोमेटिकली साइडलाइन हो जाएंगे। लेकिन क्या भारत जो है वो अपने ज्यादा वसाइल या ज्यादा अपने एक्सपेंसेस करेगा सिर्फ इसलिए कि सालों में? तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा और पैसा लग जाएगा, परंतु कम से कम जो वहाँ के लोग हैं उनके पास दवा पहुंचेगी, उनके पास खाने के लिए गेहूं पहुंचेगा, उनकी जिंदगी बेहतर होगी। तो यही मकसद है पाकिस्तान का। हमारे इसमें कुछ वो लेना देना नहीं है। अगर पाकिस्तान के थ्रू चला जाता है तो ये है जो जल्दी पहुंच जाएगा उनके पास। ये नहीं जो हमें ज्यादा मतलब कम पैसे में ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, परंतु उनके पास जल्दी पहुंच जाएगा। यही हमारी मंशा है। लेकिन सर ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगी या उनको जिस तरह से डील किया जाता है, उसमें एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है, कहा जाता है कि वो न्यूक्लियर एसिड्स बनाना चाहते हैं और पाकिस्तान के ऊपर भी कई बार इल्जाम लगा के उनकी मदद कर रहे हैं। अगर ईरान और भारत के टर्म्स बेहतर होते हैं और एक दूसरे की इस तरह से मदद करते हैं सामान ले जाने में और दूसरी चीजों में, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जाके हो सकता है कि ईरान जो है वो भारत से वही उम्मीदें लगाए जो उसने पाकिस्तान से लगा रखी थी? क्या उस सूरत में भारत उनकी मदद करेगा? देखिए, अगर पाकिस्तान ने सहायता की है ईरान की ये न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करने के लिए, तो भारत भी करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो भारत का, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड इतना एकदम इम्पेकेबल है जिसमें कोई कभी आंच नहीं आई है, इसीलिए भारत और अमेरिका ने, जिसे कहा जाता है सिविलियन न्यूक्लियर डील, भारत ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं की है, परंतु फिर भी वो जो अमेरिका ने और पूरी दुनिया का जो वियना में है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, उन्होंने एक यूनिक वेवर दिया था भारत को। किस लिए? जो हालांकि आपने एनपीटी साइन नहीं की है, परंतु पूरी दुनिया में, क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है, आप पूरी दुनिया में यू कैन ट्रेड, आप कॉमर्स कर सकते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर मटेरियल। यही बात देखिए, जब ऐसी अग्रीमेंट साइन हुई थी भारत और अमेरिका के बीच में, तो पाकिस्तान ने भी कहा था, जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे तब वहां के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा जैसे आपने अग्रीमेंट भारत के साथ साइन किया है, हमारे साथ भी कीजिए, क्योंकि हमको भी एनर्जी की बहुत जरूरत है। भारत के लिए इसलिए किया गया था जो हमको एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी हम डेवलप करना चाहते हैं। उन्होंने कहा हमको भी एनर्जी। तो वो कहते हैं बिल्कुल आपकी तुलना भारत से इस मामले में हो ही नहीं सकती। जिसे कहते हैं ना, इट्स लाइक डिफरेंस बिटवीन चॉक एंड चीज, बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो इसीलिए मेरे विचार से ईरान के जहन में ये कभी नहीं आएगा जो उसको मदद पाकिस्तान से मिली है
वही मदद उसे भारत से मिले। Recently, you might have noticed and you have seen in the press that the Iranians have offered India to supply wheat via Tehran to Afghanistan. So there were negotiations between Pakistan and India, but unfortunately, those negotiations could not be successful. So it seems that the Indians want to take the Iranian offer to supply wheat because we have not heard something concrete from the Pakistani government that whether the talks have failed but it seems that since the Indians have supplied the COVID vaccines to Afghanistan, some 500,000, I think, vaccines to Afghanistan via Tehran, so there is a likely possibility. So, do you think that this is a failure of India and Pakistan for not reaching conclusion? This could have led to something more positive, more concrete in the future. Or do you think that the Iranian influence in Afghanistan will increase? And do you also think that India can use Iran as an opportunity to be in Afghanistan via Iran? And one more thing, I just heard that the Shia lobby in Iran, in India, they're trying to push for more closer ties with Iran. That is also we have heard. So how do you see this Iran, India, Afghanistan situation, or their future trajectory for relations? Yeah, I think Iran is a very important but often overlooked player in the Afghanistan context for sure. I mean, you look at what it's done over the years. It's maintained a significant relationship with the non-Taliban governments in control between 2001 and 2021, but it also has cultivated ties with the Taliban in recent years, which have included the provision of military support on episodic levels. So it's wanted to hedge its bets, much like another country I know, Pakistan. So looking at Iran's play now, it really is very interesting. I mean, as you know, some years ago, the Indians and the Iranians and the Afghans agreed to an infrastructure project that entails India backing the development of the Chabahar port in southern Iran, which is meant to facilitate trade and transit through Iran up into Afghanistan and further into Central Asia. And it's a project that really has not been able to make much progress, in great part because of the U.S. sanctions regime on Iran, which made it difficult for India to provide financial backing. But all three, well, I should say that pre-Taliban, before the Taliban took over, the Afghan government, along with India and Iran, were both fully committed to that project. And it should be interesting to see how things play out with it now. You know, India has been able to get some waivers from the U.S. government with some of its financial activities with Iran. I'm not sure how receptive the U.S. government would be to that now. But indeed, I think that given India, well, let me put it this way, India, I think, is very keen to remind the Taliban government that India can continue to have leverage in Afghanistan. India, of course, has this track record of providing significant levels of development assistance to the Afghan governments. It was the biggest regional donor in Afghanistan for a number of years. And, you know, the conventional wisdom is that India has now been shut out of Afghanistan because the Taliban is now in power. But I think India wants to show that it still has the capacity to deliver the goods, so to speak. And that, you know, if there could be, I think that India wants to try to do that with not only a Taliban audience in mind, but also a Pakistani audience in mind. But indeed, there have been delays, as I understand it, in Pakistan providing the essentially signing off on the arrangement that would allow some Indian wheat shipments to go through Pakistan to Afghanistan. And I think we could agree that, you know, the India-Pakistan relationship is still in a troubled state, and it would be wrong to assume that Pakistan would anytime soon open up its land, so to speak, for Indian trade transit. And that's what makes the Iran case so much more important, right? India wants to get assistance to Afghanistan. It wants to prove to the Taliban government that it has the ability to be significant, that it has leverage because of the supplies it can provide. And so that means that Iran's importance rises. Now, obviously, it's more circuitous to be sending these supplies into Afghanistan via Iran. Another thing India has been doing is flying in supplies from the Gulf, as I understand it, from the UAE, among other places. But again, that's circuitous. So this definitely makes Iran important. And I think we have to look very carefully at Iran's role in Afghanistan. We've seen, as you know, in recent days, the Taliban foreign minister was in Iran for talks with Iran and also with the anti-Taliban resistance.